Hello students, welcome back to my channel. And last class in the chapter of determinants, system of linear equations, we did one topic called consistency of three linear equations in two unknowns. You were given three linear equations in two unknowns and you are supposed to find the condition uh, so that the three equations in two unknowns are consistent, will have a solution. So you did one condition, the determinant of the coefficient matrix of x, y and the constant value of the three equations, if you take a determinant of that, that should be equal to 0, then you will have consistent system of linear equations. Okay, and we did some questions, okay, regarding that topic. In this class we will start with the question, we'll start the class with an important question which appeared in JEE Advanced 2016, which for 4 marks. Okay, and for time saving, I have written a question uh, before the class only. Okay, the question is, you can read the question here. The question says, let a lambda and mu belongs to real number. Okay, we are having three variable a, lambda and mu which belongs to real number. Now consider a system of linear equation. These two system of linear equations given to you, ax plus 2y is equal to lambda and 3x minus 2y is equal to mu. These two linear equations, okay, these two linear equations in two unknowns are given to you. Now the question asks that which of the following statement or statements is or are true. We have given four options with like statements only. The first option is what? If a is equal minus 3, then the system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu. Okay, the second statement, which is option B, says that if, okay, if a, I've forgotten, if a is not equal to minus 3, then the system has a unique solution for all values of lambda and mu. Okay, and the third equation says if lambda plus mu is equal to 0, then the system has infinitely many solutions for a equal to minus 3. Okay, and the fourth option, that is a D option, it says that if lambda plus mu is not equal to 0, then the system has no solution for a equal to minus 3. Okay, so we are supposed to check all the options. Okay, because it's a question from JEE Advanced. आपको पता है question in JEE Advanced the questions are framed in this way that you need to check all the options at a time. Yes or no? First of all, तो ये आप देखो कि question किस class का है. If you check thoroughly, this question actually tough नहीं है. This question is from class 10 only. Yes or no? ये question जो है असल में class 10 का ही है. Let's do the solution. Equation basically two linear equations है, two variables है. तो क्लास 10 में हम पढ़ते थे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, हम वो अप्लाई करेंगे ना कि डिटर्मिनेंट. ओके, फॉर टाइम सेविंग डिटर्मिनेंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. लेट्स चेक फॉर यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, हम यूनिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं चेक करना, एंड देन विल मूव ऑन टू इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, एंड देन फॉर नो सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका. सॉल्यूशन इज इक्वेशन आपको दिया हुआ ax plus 2y equal to lambda and 3x minus 2y is equal to mu. Let's find this one. For unique solution, what the coefficient of x in first equation divided by coefficient of x in the second equation not equal to coefficient of y in first equation divided by coefficient of y in second equation. If you solve this one, you will get a upon 3 equal to minus 1 plus 2 will be cancelled. I will get minus 1. So from here we'll get minus and not equal to minus. Yes, it's not equal. If a is not equal to minus 3, if a is not equal to minus 3, then system will have
what unique system will have a unique solution. Yes, so you can write a system will have unique solution irrespective. You can write instead of irrespective you can write see when we solve this equation there is we didn't get the variable lambda and mu. Yes, for so you can write for all values of lambda and mu. जो कंडीशन जो हम निकाल रहे थे for no solution we got only one condition over a only, we didn't get any condition over lambda or mu. Yes, so for any value of lambda and mu and for a not equal to -3 the system will have a unique solution. Yes, so you can check the option. The first option says if a is equal to -3, okay, leave it for that. Option number B देखिए आप, if a is not equal to -3, option number B is what, if a is not equal to -3 then the system has a unique solution for all values of lambda and mu. Yes, exactly हमें वही मिला है अभी. We got a not equal to -3 and the system has a unique solution and we didn't get any condition over lambda and mu. So for any value of lambda and mu we have a unique solution if a is not equal to -3. Let's come back to infinitely many solution. Okay, हम check कर रहे हैं infinitely for infinitely many solution. So for infinite solution क्या होगा, just doing a upon 3 equal to 2 upon -2 equal to lambda upon mu. तो क्या आ जाएगा, a upon 3 equal -1 equal to lambda upon 2. You got two equation. Now अब आपको solve करना है basically क्या, देखो एट ए टाइम इसको solve करो और एट ए टाइम इसको solve करो आप. इससे जो फर्स्ट पार्ट आप solve करोगे a upon 3 equal to -1 और lambda upon mu equal to -1, इससे मिलेगा आपको a equal -3 और इधर से मिलेगा lambda equal -mu. If you solve this carefully you get lambda plus mu equal to 0. ये कंडीशन एक आया और a पे ये कंडीशन आया, a should be -3 for what, for what, for infinite solution. Yes, for infinite solution. ऑप्शन नंबर सी पढ़ो आप. ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, if option number C says what, if lambda plus mu is 0 which we got just now then the solution, then the system has infinitely many solution. Yes, for a equal to -3. Yes, option number 3 C is also correct. Now let's check for no solution. For no solution you can see what, a upon 3 equal 2 upon -2 not equal lambda upon 2. If you solve the first part you will get a you just directly get a equal to -3. मैं directly कर दे रहा हूँ. And for the second part you will get a upon mu lambda upon mu is not equal to -1. Yes, you will get this one. And if you solve this you will get lambda equal minus mu not equal, sorry, lambda plus mu is not equal 0. Okay, you got this condition and the second condition. This is the condition for no solution. Okay, for no solution अगर आपका lambda plus mu 0 हो जाता है then the system will have no solution for a equal to -3. So you can see that option number D is true. Yes, option number D is true as well. The option number A is incorrect. Why? You see, it says that if a equal to -3 then the system has infinitely many solutions for all values of lambda and mu. See, the system is having infinitely many solutions for a equal to -3 but the condition over lambda and mu is that their addition should be 0. For all values of lambda and mu नहीं ले सकते. Like example, you can take lambda equals 6 and mu equals 1. If you add that 2, 6 and 1 you will get 7. You are not getting 0. Yes or no? So in the condition we got that the value of lambda and mu, if you add that to value that should be 0. Yes or no? So option number A is rejected. Okay, it's wrong actually. It's false statement. Option B, C and D are the correct statements to the question of JEE Advanced 2016. Okay, I hope this question आप ये जो क्वेश्चन था आपको अच्छे समझ में आया हो और आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हो आपके, और आपको एक बूस्ट भी दिया होगा कि जे एडवांस में हर क्वेश्चन टफ नहीं होता. यस
क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, तो बेसिकली मैं पहले से लिख दिया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2017. Okay, this question appeared in JEE Mains, IIT JEE Mains in 2017, and you can see the question. Question says if if S is the set of distinct values of B. Okay, B जो है आपका इस सिस्टम ऑफ यूनिफिकेशन दिया गया। If S is the set of is a set S is a set of distinct values of B for which the following system of linear equation, and the linear equation is given to you is this one, has what, has no solution, then S is what, इस चार ऑप्शन में क्या होगा ये सबका? An infinite set, a finite set containing two or more elements, a singleton set, और an empty set, क्या होगा? ओके, हमें सॉल्व कर बताना है। Well, let's solve this question. Basically, three equations है, three variables है. Take the help of what, the Cramer's rule, basically the determinant method. Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं सबका, एंड लेट्स सी क्या आपका बनता है फॉर नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डी डिफाइन करता हूँ। डी इज व्हाट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो इट्स 1 1 a and it is 1 a and b, and the next is for z is what, for z will be 1 1 1. Yes, for z will be 1 1 1. Okay, how to solve? Let's use that this way। इजी वे क्या होगा आपका? Okay. Not row, you can apply this way. Instead of applying to row, the operation will apply the column operation. Let's take C3 goes to C3 minus C1, and the second operation is C2 goes to C2 minus C1, not 1, C1. चेक करो क्या बनेगा आपका। बेसिकली क्या बनेगा आपका डिटरमिनेंट 1 1, ये रहेगा as it is, 1 minus 1 is 0, a minus 1 will be as it is, and b minus a is b minus a. It will be 1 minus 1 will be 0, 1 minus 1 will be 0, and it will be 1 minus a. Now you can expand along row 1, or you can expand along the column 3. Okay? कोई वे में आप expand कर लो। I am opening again along the row 1. Okay? So 1 bracket a minus 1 into 1 minus a minus 0 into something will be 0. Okay, and everything will be 0 now. इसको देखो क्या लिखा हुआ है, this is a minus 1, and this one you can write what, a minus 1 as it is, but minus के साथ बाहर लेना पड़ेगा, becomes minus of a minus 1 whole square. So you got the value of d as this one. Okay? Let's find d of x. Okay? d of x निकालते हैं हम। तो x की वैल्यू को क्या करना है आपको, the x column, the column in which the coefficient of x values are written, we will replace that by the coefficient constant coefficient. The constant coefficient is what, the constant coefficient is 1 1 and 0, and the coefficient of b will be as it is, a b a 1 a b and 1 1 1. Let's apply again the column operation, and we'll apply the formula this way. C3 goes to C3 minus C1, C2 goes to C2 minus C1. क्या बनेगा ये डिटरमिनेंट आपका, 1 1 तो 0 as it is रहेगा, 1 minus 1 is 0, and we could have applied row method also, but I'm just applying the column method. Okay, a minus 1 and b minus 0 is b, and 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, and 1 minus 0 will be 1. Okay, इसको एक्सपेंड कर दो, अलग रो 1 में कर दे रहा हूँ, तो 1 a minus 1 into a minus 1 होगा, b into 0 is 0, everything will be 0 now. Yeah, कोई काम नहीं है। This is equal to what, simply a minus 1. तो ये dx आपका आ गया। Let's find d of y. d of y में क्या करते हैं हम, y की कोएफिशिएंट जो कॉलम है उसको आप रिप्लेस कर देते हो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बेसिकली 1 1 and 0 से, and the coefficient of x will be retained. Okay, it was 1 1 a, and constant coefficient is what,
is 1 1 and 0. Is something wrong? The everything is correct, yes. Not 0, it's 1 1, yes. And something wrong. Yeah, okay. Everything is 1 1 here, yes. In this matrix, 1 1 1 for the constant for the variable of y. Everything is 1 1, I guess. Let me check. For the variable of z, everything is 1, yes. You can apply any method now. Again, let's apply the row column method only. C3 goes to what? C3 minus C1, and let's apply the operation over C2 as C2 goes to C2 minus C1. So this determinant will become what? Determinant will become 1 1 a, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, and 0 minus a will be minus a, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0, and 1 minus a will be 1 minus a. If you open this along the row 1, you will get 1 and 1 into 0 into something. Actually, you will get everything as 0. Yes, you can just check it out. You will get everything as 0. Just check it out. D value, dy value, we are getting 0. Obviously, you will get the 0. No, you can see, you can apply the property of determinant also. Two rows are equal. Instead of expanding, we could have seen, no, the first row and the second row is identical. So the determinant value will be 0 by the property of determinant. So the dz will apply. The coefficient of x will be 1 1 and a, and the coefficient of y will be retained once more. The coefficient of y was what? It was 1 a and b, and coefficient of z will be replaced by the constant coefficient, that is 1 1 and 0. And let's apply the same property again. Row 3 goes to row 3 minus row 1, row 2 goes to row 2, sorry, not row. Applying the column operation, C3 goes to C3 minus 1, and C2 goes to C2 minus 1. Okay, I was applying the column operation, but I was saying about row operation. Okay, that was my mistake. So the column 1 will be as it is, the second column will be changed, yes. 0, a minus 1, b minus a, and this would be 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, 0 minus a is minus a. If you expand along row 1, you get a minus 1 into minus a will be this one, and 0 into something will be 0. So minus 0 plus 0. So you will get what? Minus a will be outside, a minus 1. Okay, so we got all the uh, values of dx dy. Okay, let me write over it here once. D we got a minus 1 whole square with a negative sign. Dx we got, what we got dx as a minus 1. Dy we directly got 0, and dz what we got minus a and a minus 1. Now you know something, that for no solution, हमको condition में पूछा ही गया for no solution. Okay, in question already it asks for no solution. So for no, ना it has no solution. For no solution हमें check करना है. Okay, for no solution. So for no solution, we know for no solution what will happen. This d has to be 0. Yes, so let's solve for this. This has to be 0. Okay, 0 means what? 0, which implies a is equal to 1. So for a equal to 1, d will be 0, and this is the first condition, and this should be fulfilled. तो इसका मतलब भी confirm हो गया क्या कि a has to be 1. a has to be 1. ये तो confirm है. Now see, जब a 1 हो गया आपका, ये तो fix हो गया, should be ना, ये तो should हो गया, 1 हो गया आपका. तो you see for a equal to 1, अगर जब a equal to 1 है, you put this value in dx dy and dz, you will see you will get 0 dx, you will see y is already 0, and again you will see dz will become what? 1 into 0 will be 0. आप चेक क्या, आप क्या देख पा रहे हो कि बेसिकली देखो, बेसिकली आपको क्या मिल गया, यहाँ पे से d 0 आ गया, dx भी 0 आ गया, dy भी 0 आ गया, dz भी 0 आ गया. आप तो निकले थे भाई नो सॉल्यूशन के लिए, आपने पहला कंडीशन ही अप्लाई किया था कि d शुड बी 0. ये पहला कंडीशन अप्लाई किया, आपको पहले कंडीशन से एक वैल्यू मिला a के लिए,
दैट ए शुड बी 1। अब उस वैल्यू पे आपने देखा कि जो भी रिमेनिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यूज है dx dy dz वो 0 बन रहा है, तो आपको तो चेक करना ही नहीं है, क्योंकि फॉर नो सॉल्यूशन आपको क्या करना होता है कि डिटर्मिनेंट शुड बी 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ dx dy z जो 0 ना हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम। और यहाँ आप देख रहे हो जब आपने पहला कंडीशन ही सॉल्व किया, आपको कैसा वैल्यू मिला ए का, जिसपे dx dy एंड dz 0 बन रहा है, तो क्या ये सॉल्यूशन नहीं होगा? क्या मतलब? मैंने कहा था पहले भी इन आई थिंक लेक्चर नंबर 3, मेरे ख्याल से मैंने जो बताया था लेक्चर 3 और फॉरगेटिंग, कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका एवरीथिंग कम्स आउट टू बी जीरो, डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डी अगर जीरो आ जाता है आपका, तो आपको ये चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो गिवन इक्वेशंस है वो कोई पैरेलल इक्वेशंस हो जाए, या कुछ चेक करना होगा। तो सी ए इक्वल टू 1 तो कंफर्म है, फिक्स है ये तो, क्योंकि भाई डी इक्वल टू 0 होना ही चाहिए और नो सॉल्यूशन। ए आपका तो 1 हो गया, कंफर्म है, ठीक है, a is 1 confirm। so now you rewrite the equation by taking a equal to 1। तो क्या बनेगा, x plus equation will become what, x plus let me write the equation, you will get x plus y plus z equal to 1। x will be x, okay, x plus क्या था, x plus a y था, but a is 1 now, it will become y plus z equal to 1 and the last condition is what, x plus by plus z equal to 0। ये आपका इक्वेशन बन गया आफ्टर टेकिंग a equal to 1। yes or no, because see थर्ड इक्वेशन में ax था but a is 1 तो बिकम x plus by plus z equal to 0। अभी हमारा b बचा हुआ है ऑब्वियसली, yes, और हम क्वेश्चन के अंदर हमको b के बारे में ही पूछा ही गया है कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए। बेसिकली जो हमें सेट s दिया गया है, चेक द क्वेश्चन वंस मोर, जो आपका क्वेश्चन में जो ये दिया गया डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी जो पूछा गया, यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ बी जो पूछा गया है वो किसके लिए कहा गया है, सेट एस के लिए, और एस का पूछा गया है, तो बेसिकली एस के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो बी का ही वैल्यू आएगा, इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू तो बी है सर नो। तो हमें बी के लिए सॉल्व करना था असल में, तो ए तो आपको मिल गया बाय द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। अब आपको बी को चेक करना है, तो देखो इसको आप गौर से देखो, ध्यान से देखो आप, तो इस आप जब a इक्वल टू 1 ले लिए हो, यू चेक द फर्स्ट टू इक्वेशंस, फर्स्ट टू इक्वेशन में आपको कुछ नजर आ रहा है आपको, यू सी समथिंग इन फर्स्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट टू इक्वेशन आर exactly the same, yeah, they are identical। first two equation is what, they are what, identical। ये क्या है, आइडेंटिकल बोल सकते हो या आप बोलो सेम है। सेम होने का मतलब क्या हुआ, दिस टू आर व्हाट, कोइंसाइडिंग, ये कोइंसाइड करेगा, दे आर कोइंसिडेंट प्लेन, यस, ये प्लेन जो आपस में कोइंसाइड करेगा होगा, कोइंसिडेंट प्लेन ही है, ये प्लेन कोइंसाइड किए हुए हैं। नाउ इफ यू क्लियरली लुक द थर्ड इक्वेशन, ओके, थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो एक बार, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x भी 1 है व्हिच इज सेम एज above equation and coefficient of z भी 1 है which is same as coefficient of z, राइट हैंड साइड 0 है बस, और एक b का यहाँ पे आपको दरकार है वैल्यू के लिए। नाउ सी अगर b का वैल्यू आप सी फर्स्ट टू इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, नाउ द सॉल्यूशन डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन द थर्ड इक्वेशन, बिकॉज तो पहला दो इक्वेशन तो कोइंसाइड कर चुका हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, वो तो कोइंसाइड करेगा तो दे विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो एक पे रखा गया हुआ है। नाउ अब जो भी सॉल्यूशन का निर्भर है वो निर्भर करता है किस पे, थर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी के लिए, ये हमें देखना है। सी अगर आप बी का वैल्यू कुछ भी लो, फॉर एग्जांपल आप 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, तो गारंटी क्या है कि अगर 5 6 जो भी लोग हैं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको ग्राफ में बात बताता हूँ आइडिया। फॉर एग्जाम्पल आपने बी की जगह 2 ले लिया, 2i प्लस जेड इक्वल टू 0, बेसिकली इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ डायरेक्शन dr क्या होते हैं इसके, कोएफिशिएंट ऑफ x y z, dr 1 है 2 है एंड 1 है, यस, ये dr है, और फर्स्ट टू इक्वेशन dr क्या होंगे, 1 1 1, तो दोनों का dr डिफरेंट है, यस और नो, दोनों का dr डिफरेंट है, ऑब्वियसली जब दोनों का dr डिफरेंट है तो दो ये जो द फर्स्ट टू प्लेन को कोसाइड किया हुआ है,
ये दो जो फर्स्ट टू प्लेन है एंड द थर्ड प्लेन दे विल नॉट बी पैरेलल, एक्चुअली दे विल बी इंटरसेक्टिंग, यस और नो? dr डिफरेंट है, dr सेम होता है दे विल बी पैरेलल, but now it comes what dr is different. Similarly, if you go on taking different values of b, if you go on taking different values of b, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 0 ले लो, you will see that you will get different drs. but एक ऐसा कंडीशन है b पे, प्लीज चेक इट, आप अच्छे से देखो, एक कंडीशन ऐसा है फॉर b इक्वल टू 1, देखो मन की आंखों से, तब क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इन दैट विल बी व्हाट, इसका भी डी क्या बन जाएगा 1 1 1 नहीं बन जाएगा, इसका भी डी 1 बन जाएगा, और अबव इक्वेशन का भी डी कितना है 1 1 1 है। तो बेसिकली डी अगर सेम है तो फर्स्ट टू तो आइडेंटिकल था क्योंकि उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल था, बट इस केस में देखो इसका रेफरेंस साइड इक्वल है, बस इसका मतलब आइडेंटिकल, इसका बेसिकली डी सेम है तीनों का, इफ तीनों का डी सेम हो गया इसका मतलब तीनों प्लेन क्या आपस में पैरेलल है, फर्स्ट टू का कौन साइड है क्योंकि उसका राइट हैंड साइड इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल है, थर्ड इक्वेशन का कांस्टेंट वैल्यू 0 है व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1, ये ध्यान से आप देखो, ये आपका इक्वल नहीं है इसके कांस्टेंट वैल्यू से, इसका मतलब आया आपका क्या, इसका मीनिंग क्या आया, फॉर b इक्वल टू 1 क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 क्या आ गया, इज पैरेलल टू पहला दो इक्वेशन जो भी है, अब पहला दो इक्वेशन आइडेंटिकल है, I'm writing for just x plus 1 plus x plus y plus z equal to 1. Yes or no? Third equation is what? If you take b is equal to 1, the third equation becomes what? Okay, this is wrong. My mistake. यहाँ पे z होगा, ये जो लिखा मैंने. Okay, this will be z. Okay, my mistake लिखा गया. Okay, let me cancel this. This will be z. Okay, x plus y plus z equal to 0 is parallel to x plus y plus z equal to 1. Yes or no? Obviously इस पैरेलल आ गया ये, कोइंसाइड तो नहीं करता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इक्वल नहीं है, कोइंसाइड देखो कोइंसाइड प्लेन हो या लाइन कोइंसाइड तब करता है उसके एवरी वैल्यू इक्वल हो जाए, एक्स बी जेड बी जो भी आपका दिया गया हो, लाइन हो चाहे प्लेन हो, एवरीथिंग शुड बी इक्वल और देयर शुड बी इन प्रोपोर्शन, देन वी से दे आर कोइंसिडेंट। बट आप देख रहे हो इसके जो डीआरस है, दोनों का डीआरस है 1 1 1 है, मींस नॉर्मल जो इसका नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल अब जो नॉर्मल लाइन बोलो नॉर्मल वेक्टर बोलो इस प्लेन के ऊपर वो क्या है 1 i cap 1 j cap and 1 k cap, basically which is equal to the both equations, but the constant value is not equal, so these two planes or you can say that the first two plane तो आपको coincide किया है, third plane is parallel to the first two plane, पैरेलल होने की वजह से क्या हुआ, there will be a no solution, there will be no solution, इसका मतलब आया क्या, no solution, and this is possible only for what, for b equal to 1, this is possible, this case is possible, this case is possible for b is equal to 1 only, क्योंकि b इक्वल टू 1 लोगे तो तभी dr बनेगा 1 1 1 1, इसके अलावा आप p की जगह कोई वैल्यू ले लो dr कभी भी सेम नहीं आ पाएगा, यस और नो, ऑफ द प्रीवियस टू इक्वेशंस के जैसा, तो इसका मतलब क्या आ गया, आप b आपका s सेट कैसा बनेगा, s सेट में क्या होगा, b के एलिमेंट्स थे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स, b का एलिमेंट एक ही बनाया, इसका मतलब s क्या आ गया, s के में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज बेसिकली 1, सो वी कैन से व्हाट s इज व्हाट इज ए, s क्या बन गया आपका, s इज ए सिंगलटन, सिंगलटन का मतलब क्या होता है, a set having single element, okay, a set having single element, it is called singleton set. Now you look over the options and take the correct option. Now पहला अब देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है an infinite set, no, the set is obviously finite, yes or no, finite है, actually finite भी बोलने से finite में क्या है, only one solution है। Second option says a finite set of a finite set, okay, ये बोल रहा है finite set है, पर आगे बढ़ते हैं, containing two or more element, it says that it is a finite set S, obviously S is finite, but it says again that it contains two or more elements, which is wrong, absolutely wrong. Now third option is a singleton set, which is correct, you have a milled answer, तो third option तो obviously correct है आपका, ये correct है आपका। डी ऑप्शन को देखो, ऐसा डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मैं यहाँ पे मिस्टेकली ऐसा नहीं, डी ऑप्शन को आप समझ लो कि मैंने इसको राइट दे दिया, नो नो नो, तो मैंने डी ऑप्शन को नहीं, मैंने सी ऑप्शन को करेक्ट किया है। डी ऑप्शन कह रहा है एम्प्टी सेट, नो इट्स अ सिंगलटन सेट, इसमें एक एलिमेंट है तो एम्प्टी सेट कहाँ से होगा, तो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट
answer the problem which appeared in JEE Mains 2017. I hope ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा एंड आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन अच्छे हैं तो उसके लिए बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं जो कि बेसिकली आपका JEE मेंस में आया था 2013 में। ओके, 2013 दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन JEE मेंस इन 2013। ओके, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और देखो आप किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन फिर से क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, देखो क्लस्टरिंग का इक्वेशन है पर कितना अच्छे से फ्रेम किया जा रहा है। यस और नो, क्वेश्चन पूछा द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, कितने वैल्यूज है के मिलेंगे आपको फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अब ये 2000 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया हुआ है, हैज नो सॉल्यूशन। कितने ऐसे के वैल्यू मिलेंगे आपको, एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन, कितने वैल्यू मिलेंगे। के का वैल्यू क्या वो नहीं बोलना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ के क्या है वो नहीं पता, आपको बताना नहीं है आपको। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपको जी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे के लिए, तो कितने ऐसे सॉल्यूशंस जो सेटिस्फाई करते होंगे द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, बस ये आपको जानना है। कितने ऐसे के वैल्यू आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, वैल्यू क्या के उससे मुझे मतलब नहीं है, कितने आ रहे हैं बस ये नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के निकालना है आपको। तो इजी क्वेश्चन है, बेसिकली डिटरमिनेंट मेथड से हम नहीं करने वाले हैं इसको, जितना आसान हो सके आप उसको क्लास 10 के मेथड से अप्लाई करो। ओके, और इजीली सॉल्व होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक सॉल्यूशन। क्वेश्चन करते हैं, क्या है कि फॉर क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन। यस, फॉर नो सॉल्यूशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दिस शुडंट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहला इक्वल होना चाहिए, थर्ड इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इसमें आप इसको ध्यान से देखो, k प्लस 1 है डिवाइड बाई k है, शुड बी इक्वल टू 8 अपॉन k प्लस 3 एंड दिस शुडंट बी इक्वल टू 4k अपॉन। मैं सॉल्व करता हूँ उसका फर्स्ट पार्ट। ओके, द इक्वालिटी पार्ट ये वाला, देखो आप इसको हम सॉल्व करते हैं, किसी भी एक पार्ट को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर आपको इतना मन में घबराहट हो रहा है तो आप एक काम करो, दोनों को सॉल्व कर लो, इसको भी पकड़ लो कोई किसी को। ऐसे तो एक को सॉल्व करने से आंसर आ जाता है लॉजिकली, आपके मन में है गया कि नहीं फील नहीं आएगा, हमको समझना है पूरा करके, तो करते हैं। चलो एक साथ दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ये k प्लस 1 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू 8k। ओके, मैं फर्स्ट इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, इसको खोल दो आप, k इंटू के स्क्वायर 1k प्लस 3k, तो क्या बन जाएगा 4k। ओके, ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा 4k और 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू 8k। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3k माइनस 1 इक्वल 4k इंटू k प्लस 3, ये क्या बनेगा देखो, मल्टीप्लाई करो आप, 24k माइनस 8 इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस प्लस 4 3 12k। ओके, सॉरी इज नॉट इक्वल ना, ये नॉट इक्वल में चल रहा है मिस्टेक। अब एवरीथिंग यू टेक ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देखो क्या होगा, उधर ले जाओगे सब, क्या बनेगा 4k एज इट इज रहेगा, k स्क्वायर प्लस 12k है, ये 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12k माइनस 24k विल बी माइनस 12k एंड माइनस प्लस 8 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करो, 4 से देख रहा है, 4 आपको एक कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा सब में, 4 से आप डिवाइड कर दो, तो 4 1 4, 4 3 12 एंड 4 2 8, नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको जो तरीका सिखाया था, देखो इसका रूट, आपको रूट कैसे देखा जाता है
के की जगह 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, देख के रखो। तो 0 रखो तो सोल्यूशन तो नहीं बन रहा है, पर 0 नहीं बन रहा है। और के इक्वल टू 1 रखो तो 0 बन रहा है। तो के इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन इसका फैक्टर कर लिया मैंने। के इक्वल टू 1 एक आ गया, और एक अगला क्या आएगा, के इंटू के स्क्वायर आ गया। +2 लाना है आपको, -1 है तो माइनस से मिलता माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना है, तो 0 नहीं होने के लिए आपका के शुडंट बी इक्वल टू 1 और 2, ये दोनों वैल्यू नहीं होने चाहिए। ना तो के का वैल्यू 1 हो, ना तो के का वैल्यू 2 हो, क्योंकि 1 होगा तो भी 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, और 2 होगा तो भी 0 हो जाएगा। तो दोनों नहीं होना है। के शुडंट बी इक्वल टू 1 एंड 2, ओके, दोनों के दोनों इक्वल नहीं होना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन एक आपका आ गया फॉर नॉट नॉन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, नॉट इनइक्वालिटी आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर 4k माइनस 8k विल बी 4k प्लस 3। सिमिलरली आप देखो के की जगह डाल के वैल्यू 1 0, देखोगे 1 पे 0 बन रहा है आपका। वाई 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 4 इज -3 एंड प्लस 3 इज 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये के -1 एक फैक्टर बन गया। अब के इंटू के स्क्वायर क्या हो गया, +3 चाहिए तो -1 है यहाँ पे, तो माइनस ले लो और 3 ले लो, 3 इंटू 1 इज 0, के इक्वल टू 0। अब 0 चाहिए तो आइदर के इक्वल टू 1 हो और के इक्वल टू 3। बट क्या हम यहाँ से कंडीशन मिला, यहाँ से कंडीशन क्या मिल रहा है, के शुडंट बी इक्वल टू 1। यस, ये जो आंसर ये नहीं लेंगे हम कौन सा आंसर लेंगे, के इक्वल टू 1 ही लेंगे, के इक्वल टू 1 ही लेंगे हम। और नॉट इक्वालिटी में 1 और 2, 1 2 तो आया ही नहीं है, तो 2 का कोई काम ही नहीं है। बेसिकली आपका बेसिकली आपका के इक्वल टू 3 के लिए आपका एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितना है, एक ही वैल्यू मिला आपको के का, जिससे के इक्वल टू 3, चलिए 2 मिला था और उसमें से एक रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि नॉट इक्वलिटी भी था हमारा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के कितना मिला आपको, एक ही मिला है, क्या होगा सॉल्यूशन 1 होगा। ओके, दिस इज अ सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, फॉर दिस क्लास, आज के हम क्लास में बस इतना रखते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना दी होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को खत्म करके ही हम वापस आपके जो क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे, फिर से जेई मेंस जेई एडवांस जो भी बचे होंगे सब क्वेश्चन करेंगे। ओके, 3 क्वेश्चन था जिसमें जेई एडवांस का था, 2 जेई मेंस का, और अच्छे प्रॉब्लम्स थे। 2 प्रॉब्लम्स तो आपका क्लास 10 के ही प्रॉब्लम्स थे, और एक प्रॉब्लम जो था आपका, सॉरी, एक प्रॉब्लम आपका एक प्रॉब्लम जो था इसमें वो जेई जो था आपका एक बेसिकली क्लास 12 लेवल पे। तो टिल देन आप पढ़ते रहें अच्छे से। ओके, और प्लीज आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, और शेयर भी करें यार प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।